I'm Tanya. Welcome to Infinity Learn NEET by Sri Chaitanya. And in this particular session, we will be discussing about MTP, which is Medical Termination of Pregnancy. That is another topic from the chapter Reproductive Health from grade 12. Okay. So in this particular session, we will be discussing this particular topic in the most summarized way so that it's helpful for your revision before your examination. So let's get started. Alright, so today we are going to talk about the medical termination of pregnancy, also known as abortion. ठीक है? So intentional or voluntary termination of pregnancy before the full term. यानी कि प्रेगनेंसी का जो जेस्टेशन पीरियड होता है 9 मंथ्स के जेस्टेशन पीरियड के पहले अगर आप किसी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहते हैं तो उसे हम कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP और इन लेमैन लैंग्वेज अबॉर्शन. ओके, सो nearly 45 to 50 million MTPs are performed in a year all over the world, which is basically 1/5 of the total number of conceived pregnancies in a year. Okay, there can be multiple reasons that the MTP is happening. Whether to accept, legalize MTP or not, it's being debated in many countries. But अगर हम इंडिया की बात करें, so the government of India legalized MTP in the year 1971 with some strict conditions so that its misuse can be avoided. Okay, so yes, MTP is legalized in India, लेकिन बहुत ज़्यादा strict conditions के साथ. ये आपका एक प्रिवेंशन का तरीका नहीं हो सकता कि you do not want a child and just to prevent the pregnancy आप उसे abort नहीं करा सकते, आप उसे terminate नहीं कर सकते. There has to be certain conditions. You have barrier methods, you have birth control methods if you are not wanting to conceive a baby. But once the baby is conceived, every time you cannot decide to terminate the pregnancy until and unless there are genuine reasons to it. Okay, so obviously the answer for performing MTP or abortion is to get rid of the pregnancy, to get rid of the unwanted child. Okay, it can be because of casual unprotected intercourse, it can be because of the failure of the contraceptive and also sometimes rapes. Okay, so ये बहुत सारे reasons हो सकते हैं. Casual unprotected sexual intercourse, आपने contraceptive use किया लेकिन वो contraceptive fail हो गया, या फिर बहुत बारी रेप्स के कंडीशंस में भी MTPs को परफॉर्म किया जाता है. ठीक है, सो दे आर ऑल्सो एसेंशियल इन सर्टन केसेस वेयर द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल और इवन फेटल आइदर टू द मदर और द फीटस, और या फिर बोथ. तो बहुत बारी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज के केस में क्या होता है कि आइदर द प्रेगनेंसी इज गेटिंग वेरी हार्मफुल एंड it's going to affect the health of the baby or the health of the mother or sometimes both. उस केस में भी MTP को परफॉर्म किया जाता है ताकि at least the mother could be safe. Okay, and they are relatively safe during the first trimester, मतलब up to 12 weeks of the pregnancy. If the MTP is performed तो वो relatively safe होती है. Second trimester में it's actually very complicated and very risky also. Okay, अब हम बात करते हैं एक बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्रेंड की, विच इज़ फीमेल फीटिसाइड. दैट इज यूजुअली इट टेक्स प्लेस इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में पीपल आर ऑब्सेस्ड विद अ मेल चाइल्ड, राइट. तो मेल चाइल्ड से लोग बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है इंडिया में. नाउ द प्रॉब्लम ओवर हियर इज कि जैसे ही उन्हें सेक्स ऑफ द बेबी पता चलता है, ऑफ कोर्स इलीगल मीन्स से, क्योंकि टू नो द सेक्स ऑफ द बेबी इज ऑल्सो इलीगल इन इंडिया. एंड दैट इज वाई एमनियोसेंटेसिस को भी बैन किया गया था इसी चीज़ की वजह से. किसी और कंट्री में सेक्स ऑफ द बेबी जानना बैन नहीं किया गया, लेकिन इंडिया में किया गया क्योंकि एज सून एज द पीपल दे कम टू नो दैट इट्स अ फीमेल चाइल्ड दे वांट टू अबॉर्ट इट, और जिस वजह से फीमेल फीटिसाइड का जो नंबर है वो हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. एंड आज भी देर आर पीपल जो इलीगली MTPs परफॉर्म कराते हैं just because they know that the baby, the child is a female, and उस वजह से illegally abortions कराए जाते हैं. So that is why many strict rules and regulations are made in this country so that female feticide can be avoided. But yet again, the people who want to do it, they still do it. But yes, we have to be curious enough to know, to understand that how and when to stop these disturbing trends over here, right? Of course, it is
found to be female and it's followed by MTP, it's totally against what is legal. So it should be avoided because these are dangerous both for the young mother as well as the fetus also, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा effective counseling भी provide की जाती है to Indian couples. Okay, now let's talk about the MTP Amendment Act. ये एक्ट लाया गया था 2017 में, ठीक है, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया with the intention of reducing the incidence of illegal abortion, उन्होंने यहाँ पे ये एक्ट लाया गया था. So according to this act, pregnancy may be terminated or on certain considered grounds. First of all, within first 12 weeks of pregnancy, जहाँ पे वो थोड़ी relatively safe होती है, ठीक है, on the opinion of one registered medical practitioner. लेकिन अगर 12 हफ्तों से ज़्यादा प्रेगनेंसी लास्ट कर रही है, so suppose but fewer than the 24 weeks, so 2 registered medical practitioners का opinion is must, and then only it will be found to be legal, formed in a good faith that required the ground exist also. ठीक है, so what will be the grounds? पहला तो ये हो जाएगा, the continuation of the pregnancy would involve a risk to the life of pregnant woman or gave injury physical or mental health. तो अगर जो मदर है, अगर उनकी फिजिकल हेल्थ, उनकी मेंटल हेल्थ यहाँ पे अफेक्ट हो रही है उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने की वजह से, then it would be taken into consideration. And then there is a substantial risk of the child, that the child will be born and it would suffer from such physical and mental abnormalities as to be seriously handicapped. और अगर ये पता कर लिया जाता है, ये ऑलरेडी डिटेक्ट कर लिया जाता है that the child who is about to born, अगर वो किसी फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मलिटीज के साथ पैदा होगा एंड वो सीरियसली हैंडीकैप्ड रहेगा उम्र भर, तो भी these cases are taken into consideration so that the MTP can be performed. Okay, so that was it about the medical termination of pregnancy. I hope that this session was the most summarized and it was helpful for your revision. So I hope that you liked this session and you found this session helpful. Also students, you have a very exciting opportunity. As you can clearly see over here, we are giving you this All India Test Series pack. Okay, so is All India Test Series pack mein you can get 27 grand test based on exact NEET pattern. You can get 20 online full syllabus NEET mock test, जिसमें कि आपका क्लास 11th और 12th का फुल सिलेबस भी कवर होगा यहाँ पे. 25 नीट टॉपिक वाइज PYQs you are going to get. 3 PCB books with video solutions available on the app. Also, you will get detailed solutions and performance report for each and every test so that आप अपनी mistakes को analyze कर सकते हैं और जितना भी mistake हो रहा है उसको आगे आने वाले tests में improve भी कर सकते हैं, right? So you will get the benchmarking with Sri Chaitanya students for rank analysis. और इतना सब कुछ usually you were getting it just for 5999. But अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं which is TANIA20 TANIA20, अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हैं, so you can get this test series only at rupees 4799. So do not miss this amazing opportunity and grab it right away. Thank you.